हाय गाइस। हम लोग आज से एक नया पैटर्न शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपने पास क्या है? पहला टॉपिक है ग्राफ। सो ग्राफ में क्या है? ग्राफ इज एक्चुअली डिफाइंड इन थ्री बेसिक टर्म्स। सो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम ऐसे बात करेंगे कि ग्राफ क्या है। ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। पहला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको हर पर्टिकुलर एग्जाम में या कभी भी 2 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ रहा है, तो आपकी शुरुआत जो होगी वो होगी दैट ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट अ ग्राफ मैथमेटिकली? सो मैथमेटिकली ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय g इज इक्वल टू इन ब्रैकेट v कॉमा e। सो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्यों कहा जा रहा है कि v कॉमा e लिखते हैं? ठीक है, v क्या है? v इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड e क्या है? e इज अ सेट ऑफ एजेस। सो अगेन, व्हाट इज अ ग्राफ? तो ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर and which is mathematically represented by g is equal to v comma e, where v is the set of vertices and e is the set of edges. So now like कितने टाइप में हम ग्राफ को डिवाइड कर सकते हैं? सो वी कैन डिवाइड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज। नंबर वन, डायरेक्टेड ग्राफ। नंबर टू, अनडायरेक्टेड ग्राफ। सो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्टेड ग्राफ एंड an undirected graph? So directed graph is actually does not containing any arrow symbol. So you can see this is your graph 1 and this is your graph 2. So in graph 1 you can see here clearly that from A to B to E, D, C, every vertices is connected to a set of edges, like from A to B, B to E, these are called edges. So suppose this is E1, this is E2, this is E3, this is E4 and this is E5, but none of the edges are containing any direction. So when it is not containing any directional arrow, these are said to be undirected graph. But in this particular case, like in this particular graph, you can see here that from A to D a direction is given. So suppose E1 is this is E2, this is E3, this is E4. So all the edges contain some direction. So this is called a directed graph. So what is the basic difference between a directed graph and an undirected graph? The simple difference is that in an undirected graph, the edges which connects the two vertices does not contain any directional arrow. While in the case of directed graph, the edges which connect the two vertices contains one arrow mark through which you can identify from where the starting point is and from to which the ending point is. Okay, so guys, like directed and undirected graph, there are some other ways to classify the graph category. There is one category which is based on the number of vertices, like how many vertices were there. If there are less number of vertices and if there is a more number of vertices. So on that note, we'll come down to these two categories: sparse graph and dense graph. If there is a lesser number of vertices, then we'll say that kind of graph is a sparse graph, and if the number of vertices are very high or more, then we'll say that kind of graph is a dense graph. Differentiation, you can go by this particular link. Here you can see there are only 4 vertices which is joined by these number of edges, like suppose this is E1 edge, this is E2 edge, this is E3 edge, this is E4 edge, and this is E5 edge. So 4 vertices are there and only 5 number of edges are there, which is actually making this sparse graph. While in this particular case, you can see there are there is a huge number of vertices available in this particular graph, like A, B, C, D, E, F, G, and H, and a huge number of edges is also joining them, and you can see there are some parallel edges also, that two vertices are being connected by more than one edge. So these kind of graph which are having more number of elements participating in the graph, more number of component participating in the graph, that components are called vertices and edges. जब बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो एक डेंस ग्राफ बना रहे हैं, और जब number of component like vertices and edges are less in number, then we will say this is an sparse graph. Okay, like so from the starting, if we conclude some points here, graph is a non-linear data structure. Okay,
and it is represented by G is equal to V comma E, where V is the set of vertices and E is the set of edges. Okay, mathematically these are the things. Then second, क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो हमने सिर्फ अभी कुछ ही क्लासिफिकेशंस देखे हैं, लाइक अगर एजेस के डायरेक्शन के बेस पे क्लासीफाई करते हैं तो डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, और अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस के बेस पे क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास डेंस ग्राफ है और स्पार्स ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ कौन से हैं? जिनमें एजेस में एरो हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ कौन है? जिनमें एजेस पे एरो नहीं अवेलेबल है। डेंस ग्राफ वो हैं जिनमें पर्टिकुलर वर्टिसेस की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ वर्टिसेस आर वेरी हाई और मोर। एंड स्पार्स ग्राफ कौन से हैं? जिनमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कम है, मीन्स लेस क्राउडी है अगर ग्राफ तो वो स्पार्स है, मोर क्राउडी है ग्राफ तो वो डेंस है। On this note, this video is ending, and we'll move to the next part of the graph unit in the next lecture. Thank you.